So good morning students, this is Isha Sheikh and you are studying the physics. As soon as the rotational dynamics concern, we are studying about the conical pendulum, that is a new topic. So before studying the conical pendulum, we first discussing what is the pendulum. So pendulum is nothing but it is forming due to attaching the heavily point mass. Point कैसा है? heavily point mass. That heavily point mass मतलब ये बहुत वजनदार है और आकार से छोटा है, इसीलिए कहते हैं इसको heavily point mass. And that heavily point mass is attached to the weightless and inextensible. Heavily point mass is attached to the weightless inextensible string and that becomes a pendulum. अब ये हुआ पेंडुलम की स्टैंडर्ड डेफिनेशन. अब इन नेचर ऐसा कोई स्ट्रिंग नहीं है जिसको वेट नहीं है. वेट है, वेटलेस स्ट्रिंग आपको नहीं मिलेगा. एक्सटेंसिबल ये तैयार किया जा सकता है लेकिन वेटलेस नहीं. So instead of this we consider the weighted inextensible string. और रहा सवाल, ये रिजिड सपोर्ट है और हेवीली पॉइंट मास. आपको हेवीली तो मिल जाएगा लेकिन आकार से छोटा और बड़ा हेवीली ऐसा हो ही नहीं सकता, इसीलिए हेवीली लेंगे, पॉइंट में नहीं लेंगे. तो इसको कहेंगे हम बड़ा लेंगे और हेवीली लेंगे और ये हो गया आपका पेंडुलम, दैट इज सिंपल पेंडुलम. सो व्हाट दिस इज द लेंथ of the string, length of the pendulum. This is the length of pendulum. So what is the length of pendulum? It is the distance between the point of suspension to the center of mass of bob. इसको कहेंगे हम bob और ये रहा string. So this is why this pendulum is so formed. So now students, as m is the mass of the bob, so therefore mg be the weight of that pendulum and which is always in downward direction. उसका weight जो है नीचे की तरफ होता है. Now students, the conical pendulum is how that conical pendulum is so formed. We consider the rigid support to which the pendulum is so attached and this is the length L of the pendulum. क्या कहेंगे इसको? लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड दिस इज द बॉब. अब ये बॉब लेता हूं मैं. वी आर रोटेट दैट पेंडुलम. अब इस तरह से पेंडुलम है, इसको इस तरह से रोटेट करेंगे ऐसे. सो इट फॉर्मिंग द कोन लाइक स्ट्रक्चर. सो इसी को कहते हैं कोनिकल पेंडुलम. तो इसको इस तरह से रिवॉल्व करेंगे. सो इट फॉर्मिंग द कोन लाइक स्ट्रक्चर and so therefore this is called the conical pendulum. क्योंकि इस पेंडुलम का फॉर्मिंग कैसा हुआ? कोनिकल शेप में हुआ, इसलिए इस पेंडुलम को कहते हैं कोनिकल पेंडुलम. स्टूडेंट्स, as m is the weight of the bob, so therefore mg be the weight. As we consider the conical pendulum, there arises new question that what is the time period of the pendulum, what is the tension of the pendulum and what is the speed of the pendulum, what is the angle of banking of the pendulum. So अगर इस तरह से है तो उसका स्पीड कौन सी होनी चाहिए? so that performing circular motion in a horizontal plane. Now we consider that as this is the conical pendulum, it forming the cone like structure and that bob performing circular motion in a horizontal plane. इसमें bob क्या परफॉर्म कर रहा है? circular motion परफॉर्म कर रहा है horizontal plane में. As we said that m is the mass of the pendulum, mass of the bob, g be the gravity and so therefore weight of the bob that is mg which is acting in downward. अब ये हम
कौन सी टर्म कहाँ के निकालेंगे कि जब ये बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और इस पोजीशन पर है और इस पोजीशन पे होता है, तब उसके टर्म्स क्या क्या होंगे ये हम निकालेंगे स्टूडेंट्स। नाउ व्हेन बॉब इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन अलोंग द सर्कमफरेंस, वी आर ऑब्जर्विंग their tension is directed towards the point of suspension. उसका टेंशन कहाँ पर होगा? डायरेक्टेड टूवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द, अब रेडियस आउटवर्ड डायरेक्टेड होता है हमेशा, आपको पता ही है। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉब ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। नाउ when the bob is at the extreme position, their weight is acting in downward. Now observe, when bob is at the extreme position, their tension is along the diagonal. It arises, the tension can resolve in two components, that is the vertical component, that is t cos theta, मतलब टेंशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक वर्टिकल कंपोनेंट t cos theta और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट that is t sin theta. So now this is the angle of banking, this is again, so we say theta. Now we observe that students, when bob of mass m, their weight is acting in downward, so therefore mg and that weight were balanced by the vertical component, that is t cos theta. Now students, the second horizontal component, that is t sin theta, were balanced. As the bob performing circular motion, it provides the centripetal force toward the center, so therefore we say that t sin theta, that is t sin theta, will balance the centripetal force, that is mv square divided by r. So this is about the two equations that we got. In case of conical pendulum, when bob is at the extreme position, their weight is acting in downward, and that weight were balanced by the vertical component, that is t cos theta, and t sin theta be the component that balance the centripetal force. अब हम इस दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, वी गॉट द नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस रिलेटेड विद द कोनिकल पेंडुलम। स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, सो देयरफॉर वी से दैट t sin theta divided by t cos theta is equals to mv square divided by r divided by mg. mm gets cancelled, tt gets cancelled, tan theta, so therefore tan theta is equals to v square divided by rg. स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन आपने इसके पहले भी पढ़े हैं, v square is equals to rg into tan theta, again v is equals to under root of rg tan theta. इसी को अगर डबल से सॉल्व करते हैं, देन वी गॉट द tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg, एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg. So this is the expressions for the velocity of the bob, and this is an expression for angle of banking of the bob. Students, you know that, very well know that velocity of the bob is v is equals to under root of rg tan theta, and theta is equals to tan inverse of v square upon rg. So I hope ये जो छोटे एक्सप्रेशन आपने ऑब्टेन किया है, ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आए होंगे, और इसी टॉपिक को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.